So the next conic is the last one that we are going to discuss is hyperbola. So hyperbola is a conic section because it is a intersection of a double napped cone and a plane. You can hear me? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Okay. So like in circle we have seen particular definition, parabola we have seen, in ellipse we have seen ellipse is a set of all points in a plane such that it is a sum of the distances of that point from two fixed points is a constant. So here you have two fixed points. um, these two fixed points है आपके पास, then okay, these two fixed points, so they are known as ellipse, they are known as foci f1 f2. देन आपको ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट करना है कि जस्ट लिसन, आई विल एक्सप्लेन. ऐसे पॉइंट कलेक्ट करना है कि सो आपके पास एक पॉइंट है P. सो P से F1 तक डिस्टेंस, P से F2 तक डिस्टेंस और से P1. सो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मे बी P1 F1 स्मॉल होगा और P2 F2 बड़ा होगा, वी डोंट नो, वॉट एवर इट इज. उसका जो डिफरेंस, उस दोनों लेंथ का डिफरेंस, that will be always constant. If you take another point, say here, say example बता रहे, say P2, the difference between P1 F1 and P2 F2, P2 F1 and P1 P2 F2, इन दोनों का डिस्टेंसेस का डिफरेंस, ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मे बी ये 3 होगा, ये 5 होगा, डिफरेंस हो गया 5 माइनस 3 8, मे बी 5 माइनस 3 2. सो ये हो सकते, ये 8 होगा, ये 10 होगा, डिफरेंस हो गया 10 माइनस 8 2. सो वैसे difference is always constant, like that. So if you collect all such points, you will get a shape like this kind of shape. Okay, this kind of shape we will get. That shape here you can see here, there is something like one parabola on left side and one parabola on right side, like that. So you will get a shape like this kind of, or this is known as hyperbola. So a hyperbola is a points set of all points in plane in such a way that the difference of whose distances from two fixed point is always a constant. Ellipse में some constant है, इधर different constants, difference is constant. Now some important point, once we study ellipse this is very easy. So the important point, F1 F2 ज्वाइन कर सकते हैं, जब ज्वाइन करेगा उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर, सेम as in case of ellipse, उसको मिड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर. देन जो वो फोकस से जो जा रहे लाइन, दोनों फोसी है, द फोसी से एंड सेंटर से जो पास हो रहे लाइन, दैट इज नोन एज transverse axis. Transverse axis in ellipse we call it as major axis, and here that line which is passing through the foci and the center, that is known as transverse axis. In ellipse it was major axis, and here the line which is perpendicular to transverse axis and passing through the center, that is known as conjugate axis. So these are the terms. Ellipse में major axis minor axis था. Here the two fixed points, they are called foci. Then midpoint of the line segment joining the foci is called the center of the hyperbola. Then line through the foci is called transverse axis. Then line through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. Then the points at which hyperbola
intersects the transverse axis are called vertices of the parabola. Almost all terms are similar to ellipse only. Only thing is major axis, minor axis के जगह transverse axis and conjugate axis. Okay, so that's all. So now, uh, as we said earlier, the distance from center to foci, we always take it as here. देखो, so the distance from center to foci, that is always c. So the foci can be c comma 0 or minus c comma 0. The made जैसे conjugate axis का length आरेगा to or the vertex distance from vertex to origin center to vertex, that is your a, means transverse axis का length 2a, transverse axis का length 2a एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ हम कॉन्जुगेट एक्सिस आप इधर देख सकते हैं, यू कैन सी एन एंड, एक्चुअली यू कैन सी एन एंड, बट कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2b है, 2b, सो इधर से b यूनिट अप और e b यूनिट डाउन. ओके, so only difference is transverse axis, conjugate axis. So here transverse axis का length 2a, conjugate axis का length 2b, distance from center to means distance between two foci, that is c. And the important thing, the relation connecting ABC, the relation connecting ABC is b square is equal to c square minus a square, or in other words you can say c square is equal to a square plus b square. Just keep that in mind. This is a relation, so you can go through the proof later, but just keep this relation. Ellipse में कैसे था, ellipse में the in ellipse में आपको the a square is equal to b square plus c square. So actually उधर c square was a square minus b square था. Okay, so that is in ellipse. In ellipse में हमने देखा था it is a square is equal to b square plus c square था. So c square is a square minus b square. So here in case of parabola, c square is equal to a square plus b square. Now I'm going a little fast now. We don't need the proof of all these things. Now the transverse, इधर भी two cases है, transverse axis horizontal है, transverse axis vertical है. Transverse axis horizontal है, transverse axis vertical है. Transverse axis horizontal है तो equation x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Transverse axis vertical है तो इधर minus sign आ गया. Transverse axis vertical है तो it is y square by a square minus x square by b square is equal to 1. And here what is the difference between the equation is one is minus sign आ रहे. Okay, ellipse का केस में x square by a square plus y square by b square is equal to 1 था. But ellipse में जो बड़ा जो a is always big, we assume a is always big ellipse में not in hyperbola. So क्या होता था, जो biggest denominator x square को biggest denominator आया तो major axis was horizontal, y square को biggest denominator आया है तो major axis is vertical, and biggest value को हम a square पकड़ते था, smallest value को b square पकड़ते था. अभी हाइपरबोला में ऐसे नहीं, हाइपरबोला में फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस द साइन इज नेगेटिव बिटवीन them. x square by a square minus y square by b square is equal to 1. So आप देखेंगे तो इधर तो a square b square it is not changing, you can see that. So आपको कैसे ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल है क्या, कैसे पता चलेगा, यू हैव टू लुक एट विच इज माइनस टेप. देखो माइनस इज अलोंग विथ y स्क्वायर, माइनस इज अलोंग विथ y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर के साथ है तो ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, माइनस x स्क्वायर के साथ है तो transverse axis vertical. So this is the way you have to identify whether the equation represents a hyperbola with transverse axis horizontal or vertical. Ellipse में ऐसे था, biggest denominator देखते था, x square has the biggest denominator, then major axis horizontal. If y square has the biggest denominator, major axis vertical, then biggest number को हम a square पकड़ते था, smallest number को b square पकड़ते था. बट हियर ऐसे नहीं है, सो साइन तो नेगेटिव होना चाहिए दोनों के बीच में, वो नेगेटिव साइन अलोंग विथ वाई स्क्वायर है तो ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल,
नेगेटिव साइन along with the x square है तो ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल एंड ऑलवेज पॉजिटिव टर्म के नीचे जो आएगा ए स्क्वायर, इधर देखो एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया ए स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर के नीचे आ गया ए स्क्वायर, दैट मीन्स ऑलवेज जो पॉजिटिव टर्म के नीचे आएगा दैट विल बी ए स्क्वायर, नेगेटिव टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा दैट विल बी बी स्क्वायर। ओके, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, वन मोर टाइम, साइन इज नेगेटिव बिटवीन दम। अब ये ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है क्या वर्टिकल है क्या कैसे पता चलेगा? यू हैव टू चेक वेदर द नेगेटिव साइन comes along with which one. Negative sign comes along with the y square, then transverse axis horizontal. Negative sign comes along with x square, transverse axis vertical. So next point, पॉजिटिव टर्म के डिनोमिनेटर में जो भी आएगा दैट विल बी ए स्क्वायर। सो इधर ऐसे कुछ नहीं, ए इज ऑलवेज बिगर देन बी, नहीं तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा बिगर होना करके नहीं, बट एलिप्स में था मेजर एक्सिस वाज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस, सो बिगर देन द माइनर एक्सिस, बट ऐसे कुछ नहीं इधर। इधर कभी कभी कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस से बड़ा होते हैं, कभी ट्रांसवर्स एक्सिस बड़ा होते हैं। आपको इतना ही देखना है कि जो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर यू हैव टू टेक इट एज ए स्क्वायर, वेदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी, जो पॉजिटिव टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज ए स्क्वायर, नेगेटिव टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा दैट इज बी स्क्वायर। ओके, दैट्स ऑल क्लियर। नाउ same hyperbola with a is equal to b and b are equal है तो that hyperbola is known as equilateral hyperbola। ओके, ट्रांसवर्स एक्स का लेंथ एंड कॉन्जुगेट एक्स का लेंथ दोनों के लेंथ सेम है तो दैट टाइप ऑफ हाइपरबोला इज नोन एज इक्विलैटरल हाइपरबोला। सेम अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम इज सेम थिंग, पासिंग थ्रू द फोकस, passing through the focus perpendicular to transverse axis। so here आप देख सकते हैं end points on the इधर आप जैसे मैं I will draw with the red line, so you can see that there's a this one passing through the focus perpendicular to the transverse axis and having endpoints on the hyperbola. So that is known as, same as in case of ellipse. So but hyperbola का length निकालने का formula है 2b square by a. And eccentricity also we have seen here, also eccentricity is there, eccentricity is equal to c by a। उसके बारे में ज्यादा आपको कुछ पढ़ाई करने के लिए नहीं, व्हाट इज दिस eccentricity, how it affect or how it affect the hyperbola, all those things we don't need to study। only thing we have to familiar with the standard equations। okay, eccentricity, you should understand that there is a term called eccentricity, that is a ratio of c to a, where c is the distance from the center to the foci and a is the semi transverse axis। okay, and length of the lateral sectum is 2b square by a। clear? okay, Yes, sir. okay, look at the question। so question number 1 to 6, we will not do all the questions, we will do only one or two questions। what we have to do is we have to find everything related with that, foci, vertices, eccentricity, length of the lattice rectum, all those things। look at first equation। okay, we'll do some complicated one normally। okay, fourth one we will try, 16x square minus 9y square is equal to 576। so I have told you we have to get the right side as 1 always, so what we have to do is we have to divide with 576 throughout, 576, 576। so 16 and 576 कितना आएगा? 576 divided by 16, actually 36 times। so आपको मिलेगा this will be ex square by 36 minus 576 divided by 9, so it is 64 times। so आपको मिलेगा y square is equal to 64 which is equal to 1। ना आपको देखना है कि नेगेटिव साइन किसके साथ है, नेगेटिव साइन वाई स्क्वायर के साथ है। सो नेगेटिव साइन, सो जस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम नेगेटिव साइन along with, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं along with y square, that implies transverse axis, transverse axis is horizontal, transverse axis horizontal। now
whatever comes under, so अभी आपको एक रफ पिक्चर है आपके पास, ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, मतलब पिक्चर ऐसे आएगा, दिस इज हाइपरबोला. नाउ whatever comes under the positive step, whatever comes under the positive step, that is, so that is your a square. So a square is 36 here, b square is 64. So इधर देखो ऐसे कुछ नहीं, a is bigger than b, ऐसे कुछ नहीं है. So whatever comes under a square, the positive step, that is a square. So from there you will get a is equal to 6, b is equal to 8. अभी हमें c चाहिए, हमारा रिलेशन था c square is equal to a square minus b square. Sorry, c square is equal to a square, एक सेकंड, c square is equal to a square plus b square, हाइपरबोला में a square plus b square. So आपको मिलेगा 64 plus 36 which is equal to 100. So आपको मिलेगा c is equal to 10. Now, so देखो 4c, आपको पता है जैसे 4c आएगा इधर इस पॉइंट पे, सो कितना आएगा 4c हॉरिजॉन्टल, इसलिए प्लस और माइनस 10 कॉमा 0. वर्टिसेस आपको पता है जैसे ये वाला पॉइंट हियर रेड वाला, दिस आर वर्टिसेस, उसका जो लेंथ है ये, सो ये इज 6 हियर, सो इट इज प्लस और माइनस 6 कॉमा 0. सो इधर कोवर्टिसेस है मेजर, सो कोवर्टिस, सो आई एम नॉट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इधर कोवर्टिसेस है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, दैट विल बी 0 कॉमा प्लस और माइनस 8, 0 कॉमा 8, 0 कॉमा माइनस 8, इधर minus 6 comma 0, इधर 6 comma 0. This is 10 comma 0 4c minus 10 comma 0. So 4c हो गया, vertices हो गया. अभी eccentricity is c upon a. So c is 10, 10 upon a is 6, which is equal to 5 by 3. So here you can see that it is greater than 1. So for hyperbola, eccentricity is always greater than 1. For ellipse, eccentricity is less than 1. Okay. Then latus rectum, length of the length of latus rectum formula is 2b square by a. So 2 into b square is 64 by a is 6, so it is 3, so 64 by 3, right. अभी आपको ट्रांसवर्स एक्स का लेंथ द्वारा पूछा नहीं, अगर पूछा है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस which is equal to 2a, so either 12. Length of conjugate axis which is equal to 2b, which is equal to 2 into 8, that is 16. Clear. So आप देख सकते हैं इधर ऐसे कुछ नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ बिगर होना करके नहीं, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ इज स्मॉलर. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड. Yes, sir. ओके, ये आपको इसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने के लिए नहीं है एक्चुअली, बट आई जस्ट टेल यू वेरी क्विकली, बिकॉज हमें इधर मिला है कि ये इज इक्वल टू कितना मिला 6, सो इधर 6 आएगा, इधर -6 आएगा. बी हमें मिला है कि 8, सो इधर ऊपर 8 आएगा, नीचे -8 आएगा. सो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हम इसको हम एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद वी कैन एक्सटेंड, वी कैन ड्रॉ द डायगोनल एंड वी कैन एक्सटेंड लाइक दिस. ओके, एंड नाउ वी नो दैट, इतना होने के बाद हमें पता है कि लाइक इट इज ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, सो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आएगा इसका पार्ट. सो आपको क्या करना,
सो ये लाइन असिम्टोट आने के तरफ से ऐसे आके -6 में ऐसे यू कैन ड्रॉ द हाइपरबोला. दिस इज द वे वी ड्रॉ हाइपरबोला. आपको सिलेबस में नहीं है, but just want to tell you how what is the effect of that A and B, where A is actually, you can see here, you can clearly see the transverse axis. I will draw with the some red color itself. Here you see this is the transverse axis. You can see this is the transverse axis, this red one. And uh, this blue one is your conjugate axis. Did you see? That blue one is the conjugate axis. So that is the real meaning of transverse axis and conjugate axis. But graphing of hyperbola is not a part of your syllabus, but it is very easy. How to graph is very simple. Just mark the point A and B, just complete the rectangle, then draw the diagonal, sorry, draw the diagonal and extend it. इधर बराबर नहीं है, मैंने थोड़ा सा इधर से गया, diagonal होना चाहिए, diagonal draw करके extend करना है. Then डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज राइट एंड लेफ्ट है तो ऐसे ड्रॉ कर देना. ये दोनों पोर्शन में इधर वर्टेक्स आना चाहिए, ये दोनों लाइन आपका असिम्टोट आना चाहिए. अगर अप एंड डाउन है तो इधर वर्टेक्स आना चाहिए. यू हैव टू ड्रॉ द हाइपरबोला इन द अबव एंड बिलो. ओके.